So your hips are relaxing. Your abdomen is relaxed. Your lower back, upper back is relaxing. Your chest is relaxed. Your arms, your palm, fingers, elbow, wrist are relaxing. Now gently bring your attention to your shoulders, your neck, and make sure your shoulder and neck is relaxing. If there is some tension in your shoulders or neck region, just say gently to your own self, relax, relax, relax. And feel that tension slipping away from your body. Just enjoy this beautiful relaxation. Now bring your attention to your head. Your forehead is relaxing. Your eyes are relaxing. Your cheeks, your nose, your lips, your chin, your ears, the top of your head is relaxed. Enjoy this beautiful relaxation every second, every minute. Now, very gently bring your attention to your breathing. You're breathing in, breathing out. You're breathing in and breathing out. And with each breath, your mind is becoming more and more still. Just be aware of your breath. The breath is going in, the breath is going out, and your mind is becoming more and more still. Just enjoy this stillness within. Just be mindful. In this state of stillness, just become aware of the feelings which are present in you. Maybe you're feeling calm and still, or maybe there is some tension, some restlessness, some uneasiness. Whatever that is, just be aware of it. Don't do anything. Just be aware that at this moment, I am feeling maybe relaxed, calm, quiet, or maybe I'm a bit depressed, anxious, worried, sad, whatever that is. Just accept the way it is. Just enjoy this moment of stillness. Now, just gently open your eyes and come back. Just open your eyes and come back. And I'd like to hear from few people. How are you feeling after this very short session of mindfulness or body awareness? So anybody who's ready can just raise your hand, or there's a tab on the reaction button, and there's a hand which shows like this. So you can just raise your hand electronically or physically. So I can see Uttam has raised his hand. And Uttam, I'd like to hear from you. How are you feeling after this short session? I'm feeling relaxed and comfortable.
Yeah. And would you like to add something to it? Something more? Actually, I was working whole day continuously, so just few minutes of meditation helped me to relax immediately. Yes, yes, So, yes, yeah. yes. Yeah, that's the power of this short session. Like whole day, we are doing our job, running here and there, and we are distracted, and we've been doing so many other things every day, and it's time to come back to your own self. And this 1 or 2 minutes of short session really helps me, and I really enjoy these short meditation sessions because it helps me to come back to my own self. Yeah, that completes me then. Okay, who else would like to say something about how are you feeling? Just raise your hand or unmute yourself and you can share. Devendra, would you like to share how are you feeling today? Yeah, as usual, the feeling is really pleasing. And as someone has already stated that we are busy throughout the day, doing a lot of stuff. And when we are present in this particular session, we feel as if we are experiencing the relaxation, Hmm. and it gives happiness. Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much, Devendra. Madhavi, how are you after this short session? A very refreshing session is that. And really, I feel it the whole day working and all. And then really very nice feel to comes out for ourselves and doing meditation. Very refreshing. Thank you. Thank you so much, Anita. Yes, and that's the uh, beauty of this short meditation. And you need to make it your spiritual practice. Maybe just 2 minutes of spiritual practice. Just close your eyes, go within, and connect with your own self, and that gives you really real power. Uh, Thank you so much. Thank you so much, Madhvi. Lalita, would you like to go next? And then we move to the next session. Actually, previous Thursdays and all by around 7:25 only I used to come here, and immediately having my dinner I used to sit here. But today, I came to this room around 7:10 itself. I freshened up, and I was eagerly waiting for your class. Yeah. So And it was really nice. I was just going through previous notes. So today's was something different. I really loved it. yeah, Thank you, that sir. Thanks. that's so kind of you, Lalita. And I know how excited you are every time, and you are ready with your notebook, pen. And this is, I've received so many nice messages from so many people that they say, this is my time. Every Thursday, 7:30 to 9 is my time. And that is my me time. And they don't do anything. And they tell their family members also, okay, please do not disturb us. This is my me time. So I'm so happy that these sessions are contributing to your life, and in a way it's making a difference to your life. So I'm so glad and so grateful to all of you that you come to these sessions every Thursday. So even I am so grateful, Lalita, and all of you. Thank you. Thank you. Okay, Kanchan, would you like, you just joined today for the first time, so would you like to say something, Kanchan? Hello? Yes, Kanchan. Would you like to start your video camera? Yeah. So when I got link of your small training session, I was equally very happy. Really, you can see on my face. I know, I can see, everybody can see. Just type excited, looking excited. Just type everyone looking excited. Kanchan looking excited. KLE. Just type KLE. Kanchan looking excited. Yes. Even I'm so excited, Kanchan, just to see that you are there. And we have got a nice connection for all these years. Kanchan, please tell us, where are you from? Where are you based right now?
I'm basically from UP, Lucknow, Uttar Pradesh. And where are you sitting right now? Yeah, currently I'm in Gujarat, Ahmedabad. Okay, wow, you've been traveling, and I remember we met in Delhi and Bhiwadi. Yes. What was that place? I forgot the name. Gurgaon. Gurgaon. Yes, that was Yes. long back, and I'm so Yes. happy that you are here today. Yes. Okay, Sneha, how Thank are you, you? sir. Thank you. I'm fine, sir. And how is life going on? How was the short meditation session? Did you enjoy it? Yes, sir. Thank you. जयश्री, आप कैसे हैं? Okay. So, yes, Jayashri, you want to say something? आप कैसे हैं, Jayashri? Fine. छान वाटते. हा, तुम्ही दरवेळेस असता आणि मी पाहत असतो, म्हटलं नाही आज जयश्रींनाही विचारावं कशा आहात तुम्ही. एंजॉय करताय सेशन? हो हो, खूप छान. और आप कहाँ हो अभी, कहाँ बैठे हो इस वक्त? मतलब कहाँ, घर में नहीं, कौन से जिले में हो? घरीच मुंबईला. मुंबई. ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, सो नाइस सो नाइस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग हाउ यू आर टुडे. और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे ये वाला हो चुका है, हाउ आर यू टुडे, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक डिस्क्लेमर है. कई लोग, many people tell me that this is not working at the moment, and what shall we do? So I want to put the disclaimer first. So manifestation is not a magic ki you do the 68-second thing and you do the 555 thing, and next morning you are going to get what you want. So let me tell everyone, it's not a magic. It takes time, it takes more practice, and it takes more mindfulness. Okay, so that's the first thing. Don't expect overnight revolution that you ask this evening and tomorrow morning you'll get what you want. It won't happen that way. Okay, the second thing is you need to take action, because the universe will be giving you signs, symbols. It will be sending messages in different forms, which we have seen in the last few sessions. So if you receive a message, if you receive a symbol, if you receive a sign, the universe is asking you to do something. But if you think that I'm not going to do anything and the magic will happen, let me tell you, it won't. So the moment you receive the message, take action, take that first step. And the moment you take the first step, universe will take the next 10 steps for you. So that's the power. You have to take not only action, you have to take massive action. Just remember my word, take massive action. Just don't sit in your chair or on your bed and keep thinking and daydreaming that this thing will happen. No, I know people, for so many weeks we are together, people want good health, people want a deep loving relationship, people need money, people need some abundance and wealth. But if you are not going to take action, nothing is going to happen. Your past will become your future. So if you want to have a different future, I will very much request you to take massive action. The moment you have the inspiration, the moment you have the intuition, take the step, trust the intuition, and take that first step. And then you will see the magic happening. You'll have more confidence. Take those baby steps and the magic will start happening. Okay, the third disclaimer is manifestation happens when you mindfully practice the 5 virtues. So if you're not practicing the 5 virtues and you think that the manifestation will take place, it won't. Let me be very clear. If you're not practicing the 5 virtues, which we talked in these sessions, and if you expect that the magic will happen, it won't. So you have to constantly, mindfully practice the virtues. So let's see what the virtues are. So the first virtue is love. Okay, whatever you do, whatever you say, the way you behave, the basis of it needs to be love. And in second or third session, when we were talking about vibration, so love is the highest vibration.
Okay. And at the bottom is the shame, guilt, depression, anger, frustration. And if you are vibrating at the level of sadness, depression, shame, and guilt, those waves are going out in the world, in the universe, and you are attracting the same thing in your life. So the first virtue is make it a conscious effort. Be mindful. Are you operating from that space of love? I really mean it, because until and unless you're not going to operate from that space of love and compassion and kindness and gentleness, the magic won't happen. So it's not about doing love, it's about being love. Be the love, okay? And start practicing it every day with your family, with your kids. And especially, we did a session on self-love. Love your own self. The moment you are in that space of love all the time, the magic speeds up. Okay, so the first virtue you need to practice if you want to manifest something in your life is to vibrate on the frequency of love. The second virtue is generosity. Okay, we saw what you sow, so shall you reap. जो दोगे वो पाओगे. अगर आपको कुछ चाहिए, आपको प्यार चाहिए, if you need love, sow the seeds of love. If you need health, sow the seeds of health. And if you need money, start giving. That's the universal law. Until and unless you don't give, you are not going to receive. That's as simple as that. Suppose you've got a handful of grains and you want a sack full of grain from it. So you have to let go of those grains which you are holding in your hand. If you say, no, I'm not going to let go of these handful of grains, but I need the sack full of grains, you are not going to get it. It's about letting go. The more you let go, the more you give, the more you share with people, the more you receive. So this is the act of generosity. And it's not about just giving money. You can share your knowledge. You can share your skills. You can give what you have. Like last time we did talked about Ikigai. So what is your Ikigai? So I was so happy people sent me personal messages saying, my Ikigai is teaching. My Ikigai is music. My Ikigai is drumming. My Ikigai is serving food. And so if you are good at that, if you love doing that, and if you're good at, you have the skill, start giving it to the people. And you see the magic will happen. So the second virtue, if you want to manifest anything in your life, the second virtue is generosity. The third virtue is honesty, truthfulness. If you're cheating someone, if you are not telling the truth, hiding few things, so the energy goes into the vibration of shame and guilt, because your conscience is telling you you're telling a lie, you're hiding information, you're cheating, and the vibration comes down. And the moment the vibration comes down, the manifestation stops. So make sure that you are honest with your children, with your partner, with the job you are doing, with your colleagues. Just be honest. It takes a lot of courage to be honest. And then the fourth virtue is kind speech, the gentle speech, loving speech, because that's the most powerful tool you have. You connect with people through your words, through your speech. So be gentle whenever you speak with someone. Fill your speech with love, kindness, compassion, and the magic will happen. Because the moment you use harsh word, you're vibrating at a lower level. And the moment you're vibrating at a lower level, that means you're not manifesting. The fifth virtue is the mindfulness. And this is not the last one. This is the foundation of mindful manifestation. If you want to manifest something, you have to be mindful of your speech, your acts, the way you behave, the way you talk, the way you eat. Okay, so mindfulness. And that short session which we did of 2 minutes of breath mindfulness, that you're aware of your breath or your breathing, just keep practicing it every day. Just extend the time, not just 2 minutes, maybe 10, 15, 20 minutes every day. Just be with your own self, and you will become really mindful. And maybe after a few days, you'll see the benefit of this mindfulness. So these are the 5 virtues. And if you start practicing these 5 virtues, then the process of manifestation will speed up. Okay.
So the intention of this group, may all human beings manifest amazing health, abundant wealth, and deep loving relationship in their life. So that's the intention why we started this Thursday circle. And I'm so happy that you people are there, and just hold this intention in your mind. Whatever you do, it's for the well-being of all human beings and for their health, their wealth, and their relationship. Okay, so before we move forward, just want to connect with all of you and would like to hear from few people. How was it like? I shared the 5 virtues, that these 5 virtues are really important if you want to manifest something. So if something is coming and you want to share something in relation to what we just heard, so just feel free to raise your hand and speak up. Anyone? Was that valuable? Was that some insightful? Anyone? Just raise your hand if you're feeling like sharing, or else we can move forward. Great. सर सिमरन को कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको. Okay, Simran, I have a question. Okay, thank you. Thank you, Dr. Swati, for reminding me. And may I request Dr. Swati, if I don't see the chat much when I'm talking, so just I need your help, Dr. Swati. If somebody mentions or writes a question over there, just let me know. And I'm so glad that you mentioned. Yes, sir. So Simran, go ahead. Sir, can you hear me? Yes, I can. So last time you taught the technique 555 manifestation. Yeah. You have to write 55 times 5 days. Where is your So video, what Simran? was I the- can't see you. So actually there is network issue over Okay, here. Power okay. cut, Yeah, I understand. that's why. Yes. So, so what was the motive behind that? Like you have to write 5 days, 55 times the thing you want to manifest. Yes, the motive was to manifest whatever you want in relation to your health, wealth, or relationship. Okay, and the magic is not in 55. Like, did you attend that session or you missed that session? I attended it. Yeah. I just missed few part of it, but I attended it. Yeah, yeah. So the magic is not in writing 55 times for 5 days. I mentioned that. The idea was to focus, because the first session which we did was intention. What is your intention and where is your focus? So the moment you start writing for 55 times, your focus is totally on your intention, whatever you want to manifest, and you're writing it for 55 times. And we have also seen the repetition, the power of repetition. So you're not writing it for 1 day, but you're writing it for 5 days and 55 times. I know it takes long time. There are so many people who are writing and who have got so beautiful results from it. And they say it takes around 40-45 minutes to 1 hour to write those 55 things. But I did mention one thing, Simran, that the power is not in writing. The power is in the love, the consciousness. You have to vibrate at that level of love, raise your consciousness to that vibration of love. And so you can sit for maybe 2-3 minutes, close your eyes and raise your consciousness. I've taught this technique in second session when we talked about vibrations. So raise your vibration to love and then start writing, and then the magic happens. So it's about what attracts your intention, or what manifests is the vibration, the feelings you are having inside. It's not the writing. Okay. So as you start writing, you have to raise your consciousness to love. Okay. And from that space of love, you have to start writing, and then the universe responds. But if you are writing and you're saying, ye hoga, nahi hoga, pata nahi, whether it's going to work or not work, and if you have doubt, but you're still writing because I'm asking you to write, let me tell you, it won't work. Don't write because I'm asking you to write, but write because it's joyful for you, because it's giving joy, it's giving happiness. Okay. And as you're writing, raise your frequency to love and enjoy that moment. Enjoy that moment of writing. And when the frequency is really high and you're writing, the power of manifestation speeds up. Okay, so the power is not in writing,
but the power is in your writing. At the same time, you are raising your frequency to love. Okay, got it? Yes, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Medha, for writing insightful, valuable too. Thank you so much. So are you ready for today's session? If yes, just type yes in the chat box. Otherwise, I'm not going to share. Uttam Shetty is saying yes. Thank you. Yes, Parisa, Simran, yes. Sneha, Shubhangi, yes. Lalita, yes. Madhvi, Swati, Hansraj, Jayashri Gaikwad, Sheetal. Okay, I got it. I'm starting the sessions now. Otherwise, what happens if there's no response, then I don't start. You know that very well. Okay. So let's begin. I received so many questions. Why I chose this topic, it was not my choice. I received few questions and people were asking me about they were saying like there are three things: health, wealth, and relationship. And most of the time, the biggest concern they have right now is not the health or relationship, but wealth. And because the wealth is not there, the money, the vitamin M, somebody called it last time. So because the vitamin M is not there, it affects the relationship, it affects the health, because you are more stressed, you are in tension, and it affects your physical being. So they said, why don't we do a small session on remove your money blocks? And people were saying that we earn money, but we don't know where it goes. हाथ में पैसा आता है पर कहाँ निकल जाता है. That are the exact word that person shared with me कि सर हाथ में पैसा आता है और कहाँ निकल जाता समझ में नहीं आता, क्या करे. So I said, okay, let's do a small session on remove your money blocks. So here we are today, and let's begin the session. So this session is all about if you want to manifest financial stability, if you want to manifest abundance, prosperity, and money in your life, then you need to know what are the blocks which are stopping you from manifesting this money or your wealth. Okay, so I'm just going to dive deep straight away, and maybe in the end we will do the Q&A. So if you have any questions, just hold your questions and I'll answer your questions in the end if possible. Okay, so the first block, which I call the law of thermostat. Okay, this is your first block, the law of thermostat. So what is a thermostat? So thermostat is a device, okay? Like you have air conditioner in your home, AC in your home, and you set the temperature to say 22. So the thermostat, what does the thermostat do is it maintains the same temperature. The moment the temperature goes to 23, it will start the cooling and it will bring the temperature to 22. If it drops, say to 20, it will raise the temperature by 1 degree and it will again bring the temperature to what you have set, that is 22 degrees. Okay. And it's not just in air conditioner, it's everywhere. Like when you go to Europe, there's cold and they have, instead of AC, they have these heaters, which the heating system in the room, and they put a thermostat over there, and like AC, they put the temperature, how much heat they need in their house, and it regulates. Like in your shower, in your bathroom washing area, you have what you call the geyser, which warms up the water. Even it works on the thermostat. So you set the temperature and you switch on the geyser, it will boil the water to that temperature you have set. And once that temperature is reached, what happens is it automatically cuts off the electricity and the water won't boil. The moment the water becomes little bit cold, it again starts boiling it. So even in the electric press, the press which you use for ironing your clothes, so even that has a thermostat. You set for cotton clothes, linen clothes, and silk, and it keeps the temperature that way. So the first law or the first block is the law of thermostat. So my question to all of you, what is your money stat? Like thermostat, that's the temperature stat. What is your money stat? At what level you have set your mind that this is what my money stat is? And that is the
crucial thing because maybe you are not aware of this term. This is maybe for the first time. पहली बार आप सोच रहे हो कि ये money stat क्या होता है. So I'm going to share with you कि you put a number in your conscious or subconscious mind that this is my money stat, and you will receive that much amount of money every time. Okay. But if suppose you say my money stat is 10,000 rupees a month. So now you have fixed your money stat to 10,000 rupees a month, and you will start getting 10,000 every month. You won't get 11,000 because you have told your mind, you have told your subconscious, my money stat is 10,000 rupees. And if you have fixed your stat to 10,000, you are going to get that much money. And this is where the problem begins. As a child, you hear so many things from your parents, your teachers, your society about money, that money is bad, money doesn't grow on tree, and money is evil. And if you believed all those things, so your thermostat is set now that money is evil, money is not good, rich people are bad. Okay, all those things are your limiting beliefs. This is how your money stat is set. And once you have this limiting belief, then what happens is it's so difficult to raise your money stat. If you say, no, I want 1 lakh rupees, but your thermostat or your money stat is at 10,000, no matter how hard you work, you are going to get 10,000 rupees. So that's the first thing. So what I will appreciate is like, keep a notebook and pen ready and keep writing, what is your money stat? Aapka worth kya hai? What is your worth? Okay. Okay. So that's the second slide. What is your self-worth? So you put a number over there that this is my self-worth. And the moment you put that self-worth, that becomes your reality, like a thermostat in the air conditioner. So that becomes, it's set to that number and it won't go up. Okay. So let's move forward and see what happens. My self-worth story. Okay. Because I can talk about it, but let me share my story with you. And I really, how many people would like to hear my story of self-worth? Aapki aukat kya hai? Aapka worth kya hai? Okay, I see the hand of Madhavi. In the chat box, type me. Agar aap meri kahani sunna chahte ho, Kanchan, so type me, then I'll share. Okay, Simran, me, Sneha, Parisa, Dr. Neeta, Swati, Amrita, Uttam, Hansraj. Okay. So, I don't know whether I've shared this story with you before, but I'm going to share. And this is one story which really transformed my life. Okay. I had set my thermostat at a very low level. That was maybe 15, 16 years back. And I was wondering, paisa kyun nahi aa raha hai? I knew I was a good trainer. I know that I am good at public speaking, and I know how to connect with people, but still the money was not coming. And that was the biggest money block I had in my training field. Because after I resigned from my job long back, 23 years back, my dream was to create my own empire. That's what I told Suchita, my wife, that Suchita, I want to create my empire in the training field. And she said, just go ahead, I'll support you, do whatever you want to do. And for 6 months, I didn't earn a single penny. Okay. 5 paisa nahi kamaya. 6 mahina mein ghar pe baitha tha. Suchita was feeding me. She was earning and I was just sitting at home. And I thought, I'm a good trainer and people will invite me and they will give me opportunity to serve the company. But it didn't happen. For 6 months, I was in frustration. That was in 2000, around 2000, 1999 or 2000. Okay. That was the time I had resigned. And in 6 months, I knew ab kuch hone wala nahi hai. And I was really struggling. I can share one thing, like I had printed nice brochure and my company name was Turning Point. Is Sonali here? Sonali, are you there? Sonali, yes, I can see her name. And why I'm mentioning her name, my logo was designed by Sonali. She's a graphic designer, okay? And I requested her, that was long back. I don't know whether Sonali remembers that or not, but my company was called Turning Point and my logo was designed by Sonali. And so I had a brochure, I had nice
presentation, and I had a two-wheeler 4S Bajaj Kawasaki or something. So every morning I used to sit on my motorbike, go to company with helmet and tie and my brochures. And I live in Pune, so on Pune Nagar Road I used to travel, and there's a MIDC belt, so all companies are there. So I started with the first company. I went to that company and I met the HR, and she was a very kind woman. And I said, I am Anirudh and I am a corporate trainer, and I do corporate trainings. And she said, wow, thank you. And I used to give my brochure to them, and they were so happy receiving the brochure and what modules. And then she said, how many days training and how many people? I said, in my training, there are 20 people, and it's a 2 days training. So far, so good. Everything was working very nicely. And that after that was the important question they would ask, ki kitna lete ho? What is your fees? So I would say 2 days, 20 people, 2,000 rupees for 2 days. Because back in 23 years back, 2,000 rupees for 2 days was enough for me. And I was so happy that I'm asking 2,000 rupees and for 2 days. And the HR would say, wow, that's really nice. That's so kind. And she would say, okay, we'll call you back. And I always thought they will call me back. But Jayashree, nobody called me. Never. For 6 months, this is what I was doing. 6 months, company to company, 2,000 rupees, 2 days, 20 people. Nobody called me. And then I was so frustrated, I had no idea what to do. One day I was sitting on my computer and I saw an advertisement, a German trainer named Bob, and he was offering a training in Germany. And he was quite famous. The fees was $3,000, 3,000 euros. And I said, no matter what, I have to do this training. But I had no idea what to do. And I had no money. But somehow I wrote to him an email saying that I'm a trainer from India and I'm so impressed by your email and the ad, but I want to do, but I have no money. What shall I do? And I forgot. I wrote the email, I forgot. 2-3 days afterwards, I was just checking my emails and there was an email from Bob. And Bob said, I'm so happy that you're passionate about training. Don't worry about the money. I'll pay for your flight, I'll pay for your visa, and I'll pay for your training. You just come to Germany. That is the first manifestation. Just remember the power of manifestation. You have an intention, you set your intention, and you send the vibration out in the world. वो पिछली बार बोला था ना हंसराज ने कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे दिलाने में. So हंसराज, are you there? आप हो वहां पे हंसराज? Yes, sir. Yes, तो आपका डायलॉग था ये पिछली बार का. तो पूरी कायनात जुड़ जाती है. और मेरे साथ यही हुआ कि I had no money, but this Bob Sterling from nowhere appears on my screen. I send an email and he says, yes, please come. So I went to Germany, did training with him. But still, there were around 90 people on his training. Each person had paid 3,000 euros for that training. And I was the only one who got the scholarship, and I was doing a free training. But in my mind, I was asking, I'm such a nice trainer. I know how to connect with people. I know how to deliver things. I know how to do the PowerPoint presentation. But why don't people give me an opportunity? And I thought he's the teacher who's doing it. I have seen that he's charging $3,000 and 3,000 euros, and people are paying for that. So on the last day when I was about to leave, I asked Bob, I have a question. Can you answer? And he said, yes, ask. I said, I've been asking people to give me an opportunity, but nobody invites me. They say, okay, we'll give you a call, but nobody calls me. So what's the problem? And he was in the training for so many years. Now he's no more. He passed away a few years back. So he said, how much you charge? And I said, 2,000 rupees for 2 days, 20 people. And he looked at me, he took out his calculator and he started calculating how much is 2,000 in euros. And he gave me a very nasty smile. Hasa much pe wo. And I had no idea why he's having that kind of smile. And he said, Anirudh, that's too low. Can you raise? और तब मेरे मन में आया कि लोग 2,000 नहीं दे रहे हैं और
And he's saying, so this is my story, rupees 2,000, 2 days, 20 people. And he was saying, increase your self-worth, अपनी औकात बढ़ाओ, ये बहुत कम औकात लगा रहे हो, अपनी कीमत कम लगा रहे हो हंसराज. और उस बॉब ने कहा कि अनिरुद्ध अपनी औकात बढ़ाओ, अपनी कीमत बढ़ाओ. एंड मैं बोल रहा था लोग 2,000 नहीं देते हैं 2 दिन के, तो ज्यादा कैसे मांगू. He said, try, ask, just raise your worth. So very hesitantly, I was really uneasy doing it, but I raised my worth. And I said, okay, 2,500 rupees. And he laughed at me again, because he knew what is the worth of 500 in euros. And he said, Anirudh, our meeting is over. मैं बोला, why? He said, no, it's over because you're not listening to what I'm saying. I said, but I need your help. He said, I'm ready to help you. Now do one thing. And what he did, he took out a piece of paper from his pocket and scribbled something. उस पे कुछ लिख दिया, folded it, and he put that paper in my t-shirt pocket. And he said, don't look at this paper just now. Okay, don't look at it now. When you go back to India, after that you look at it. So I just followed what my teacher said. I came back to India and I forgot about the paper. Maybe after a week, I remembered he gave me a piece of paper and what that paper was. So I found that t-shirt and took out that paper. And I've got goosebumps, I feel really emotional when I share this with everyone, because this is about आपकी औकात क्या है, आपकी कीमत क्या है. And जब मैंने वो पेपर खोला, so मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी. How many people want to know what was on the paper? Just type yes in the chat box if you want to know what was on that paper, which totally changed my life. Yes, Simran, yes, Medha, yes, Hansraj, yes, Sneha, yes, Sheetal, Parisa, Neeta, Kanchan. Okay, thank you so much. So I just want to check whether you are with me or no. So I opened that paper, and then the moment I opened, I found it so difficult to stand. So I was holding the door and I was standing, looking at the paper, and the tears were rolling down my eyes. And I had no idea. Even right now, you can see that I'm speechless. I don't know. And that was the turning point in my life. And the thing which was written on that paper was rupees 25,000 per day. I was charging 2,000. Nobody invited me. Everybody said, we'll let you know. We'll call you. Then I said 2,500. And all of a sudden he says, rupees 25,000 per day. Bob told me, Anirudh, आपकी औकात 25,000 रुपया per day है. आपकी कीमत 25,000 है. And I didn't believe him. I didn't believe. मुझे, I still don't know what to say, okay? This is the true story of my life. But I said, if he's saying, if my teacher is saying, and I've seen him doing it, let's try. But I know on the Pune Nagar Road, all the companies know me. On the Pune Nagar Road, all the companies know me and my worth कि ये 2,000 वाला है और 2,000 पर 2 दिन का training है इसका. So I said, no. Devendra, then I said, I'm not going to go to Pune Nagar Road. This time I'm going to go to Pune-Mumbai Road. And Uttam, the first company after you leave Dapodi, the first company on the left side, I went there. Same brochure, same motorbike, same helmet, same tie. I went there and there was this lady HR sitting there. And I said, I'm a corporate trainer and I've come with a proposal. And she said, welcome. Would you like to have tea or coffee and all that stuff? And then I did my presentation. I gave my brochure to her and she said, that's really exciting. And then the final question, how much is the fee? How much you charge? And Uttam ji, मेरा गला सूख गया था. मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि 2,000 लोग देते नहीं है. 25,000 मांगूंगा तो कैसे देंगे? I knew कि she is going to call the security guard and say, throw this guy out. This is the jackal thinking, the monkey mind which was telling me कि अनिरुद्ध तेरी औकात नहीं है 25,000 की. 2,000 नहीं देते तो 25,000 कौन देगा? And I was like, मैं डरा हुआ था कि ये पक्का सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बाहर फेंकेंगे.
So the moment I said 25,000 per day and 20 people, the moment I said that, she lifted her phone and called someone and she said, please come in. I knew she's calling the security guard. मेरा मन बोल रहा था अब ये security guard को बुलाएगी और फिकवाएगी बाहर. But a girl came in and she said, look at the girl, and she said, prepare his contract. And that was the day I signed my first contract in my life for 25,000 rupees. And that time I realized what is my awqat, what is my worth, and meri कीमत क्या है. So the first block is the law of thermostat. आपने आपका तापमान कहाँ रखा है? अगर आप 10,000 में खेलना चाहते हो, that is your worth. But the universe is willing to give you more. You have to have that courage. You have to have that faith. And then you need to ask the universe. I know there are so many people. I know, Lalita, you are into the herbal medicine, and we've spoken about it. Devendra, you are into singing, and Shaila, I know she is into drumming and counseling and training as well. And there are so many people. But you need to raise your thermostat. You need to raise your money stat. And then only the manifestation, then only the universe will support you. So I'm quite emotional right now after this story. I would like to hear some feedback from few people कि ये कहानी सुनकर, it's not a story, it's a real life story. ये कहानी सुनकर आपको अभी क्या लग रहा है? So just few people raise your hand, and I would like to hear. Who would like to go first? Just take a minute. Who would like to go first? Anyone? Madhvi, क्या लग रहा है ये कहानी सुनकर? I know you are into yoga field. You are a trainer, yoga, and you've got your own yoga practice online and offline. And क्या लगता है, मांगने में आसानी होती है, डर लगता है, या कैसे मांगू, क्या होता है? And what did you learn from my story? जो एक्सपीरियंस आपका रहा वो मेरे साथ हुआ था when I was in offline, when I was taken in my offline sessions. Last 5 years मैं जब मुंबई में थी तो कॉर्पोरेट सेशन पे भी लोग इतने गिन करते हैं, मतलब 500 पर सेशन के 500 चार्ज होते थे उस वक्त के, लेकिन मैंने मेरा चार्ज पर सेशन का 1,000 रुपीज रखा था. और पर सेशन मतलब 1 आवर के, तो लोगों को इतना मतलब ना, पीपल वाज जजिंग अस की क्या 1 घंटा बैठाती है, योगा क्या करवाती है, हाथ पैर तो हिलाना है, उसके 500,000 कैसे चार्ज करती है. बट दोज हु रियली फील इट, वो मेडिटेशन है, योग निद्रा से है, जैसे कि आज हमने अवेयरनेस का सेशन किया, तो अगर उनको पता चल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं एंड दे पे आस. Yes. लेकिन उनको वैसी क्वालिटी देनी चाहिए पहले हमने, ऐसे मुझे बिल्कुल. लगता है. और एक वन मोर थिंग सर, मुझे ये कहना था कि जहाँ पे उसकी जरूरत है ना, वहां पे ही वो होता है. अभी मैंने यहाँ पे देखा है उत्तराखंड में, पीपल डोंट नीड इट एनीथिंग. यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है शायद लोगों को, तो इसलिए समहाउ इसके लिए मुझे आप क्या मदद कर सकते हो प्लीज? अगर जरूरत नहीं है तो जरूरत क्रिएट करो. ओके. एक कंपनी थी जो जूते बनाती थी, और जूते बनाने वाली कंपनी थी, और मार्केट ढूंढ रही थी, और उनको पता चला कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों को इसकी जरूरत है. तो कंपनी का मालिक है, समझिए उनका नाम देवेंद्र है, और देवेंद्र कंपनी के मालिक हैं, और वो बोलते हैं कि आप वहां जाइए और अपने शूज को वहां बेचिए, क्योंकि वहां बहुत बड़ा मार्केट है. वो बंदा वहां जाता है, सेल्स का जो रिप्रेजेंटेटिव वहां जाता है और कहता है कि जाके देखता है, और जाके देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है कि कोई भी बंदा शूज नहीं डाल रहा, सब नंगे पैर घूम रहे हैं यहाँ वहां सब जगह, और कोई भी जूते नहीं पहनता. वो उनको बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस जूते को खरीदिए, आपके पैर सेफ रहेंगे, ये रहेगा. सब बोलते पागल हो गया क्या, किसी ने पहने क्या, यहाँ पर क्यों बेच रहा है, और ये हमको नहीं चाहिए, हम बिना इसके रह सकते हैं. और वो वापस आ जाता है और बोलता कि देवेंद्र सर, ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है वहां पे.
और कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पहनता ही नहीं जूते वहां पे। और देवेंद्र बोलता ठीक है। फिर वो देवेंद्र को पता है क्या करना, वो अपना दूसरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। और जब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाके देखता है कि कोई भी बंदा शूज नहीं पहन रहा है, चप्पल नहीं पहन रहा है, वो सोचता क्या यार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका है कि हर एक को मैं पहना सकता हूं, क्योंकि कोई जूता चप्पल पहन ही रहा, बहुत बड़ा मार्केट है। वो माइंडसेट लेके जाता है वहां पे, वो नीड क्रिएट करता है, जरूरत क्रिएट करता है, और लोगों को रियलाइज होता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, शूज और जूते पहनना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम दैट डे ही स्टार्टेड सेलिंग, और बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। सो माधवी, जैसे आपने अभी कहा कि मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड के लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, और मैं कहूंगा कि उत्तराखंड के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लोग हेल्दी हैं, चलते बहुत हैं, सो दे कैन स्टार्ट ट्रेनिंग अदर पीपल। सो यू डोंट ट्रेन इंडिविजुअल्स नाउ, क्योंकि वो पहले से ही हेल्दी है। आप उनको योगा ट्रेनर का कोर्स शुरू कीजिए वहां पे, और उनको बोलिए कि अगर आप ये ट्रेनिंग कोर्स करते हो तो आप भारत के हर बंदे को, जिसको डायबिटीज है, जो ओवरवेट है, जिसको हाइपरटेंशन है, जिसको बहुत सारे बैक के प्रॉब्लम है, आप उनको योगा का ट्रेनिंग दे सकते हो। और उत्तराखंड और वो क्या होता है, ऋषिकेश, ये जो सब एरियाज है, ये योगा मेडिटेशन आश्रम के लिए फेमस है। तो लोग वहां के लोगों को ढूंढते हैं कि कौन वहां का ट्रेनर है। तो यू स्टार्ट द ट्रेनर्स ट्रेनिंग। अगर आप एक बंदे को सिखाओगे योगा उसके हेल्थ के लिए, तो आप 1000 रुपया कमाओगे। पर अगर आप ट्रेनर्स ट्रेनिंग शुरू करते हो 25,000 लेकर के, सो एक क्लाइंट मिलता है, आप उसके 25,000 बना सकते हो। माधवी, क्या लग रहा है ये सुन के? यस यस, हाँ, इस वजह से मैंने नहीं सोचा था। थिंक बिग। इस वजह से मैंने सच में नहीं सोचा था। ये सोचिए, 1 घंटा देके 1,000 एक आदमी के लिए आप 1,000 बना रहे हो। 1 घंटा Great देके idea. अगर आप ट्रेनर्स ट्रेनिंग शुरू करते हो, 25,000 देगा वो। समझ में आ रहा Yes, है? why not? आप आपका Yes, सर्टिफिकेशन yes, शुरू कीजिए, योगा सर्टिफिकेशन उत्तराखंड की स्पेशल। आपका यूनिकनेस क्या है उसको सामने लाइए, उस यूनिकनेस पे आप बेचना शुरू कीजिए, और देखिए जादू शुरू होगा। कैसे लग रहा है अभी सुनकर ये सब? हाँ, I'll try my level best. इसमें मैं सच में अभी थोड़ा सा सोचूंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। थोड़ा हटके है ना, but I really try. थोड़ा सोचूंगी और थोड़ा करूंगी नहीं। डिस्क्लेमर अगर आपने सुना है, स्टार्ट में मैंने डिस्क्लेमर बताया है कि जो पॉइंट नंबर 2 था, टेक मैसिव एक्शन। जैसे ही आपको इंट्यूशन आता है, जैसे ही आपको मैसेज आता है, बिना वजह मैंने इतना बोला नहीं है। यूनिवर्स बोल रहा था कि माधवी के लिए बहुत जरूरी है अभी, और वो यूनिवर्स मेरे थ्रू आ रहा है, आपको बता रहा है, आइडियाज दे रहा है। सो यू हैव टू टेक एक्शन, क्रिएट अ एक्शन प्लान। बहुत हो गया एक एक लोगों को खिलाना सिखाना। आई वॉन्ट टू सी दैट आपका इंस्टीट्यूट जो है वहां पे एक को 1-to-1 नहीं करे, तो आप ट्रेनर्स ट्रेनिंग शुरू कीजिए वहां पे। ये आप कई सालों से योगा में, मुझे पता है, हम 20 साल पहले जब मिले थे तब से आप शुरू कर रहे हो ये। Yes, yes, sir. Yes. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड विश Thank यू ऑल you, द thank बेस्ट। you, thank you. और एनीबडी एल्स Thank वुड you. लाइक टू से समथिंग? व्हाट वाज द लर्निंग फ्रॉम माय स्टोरी? रेज योर थर्मोस्टैट। अपनी औकात कम मत लगाना, अपनी कीमत उत्तम कभी कम मत लगाना। उत्तम जी, आप क्या कहना चाहोगे? यस, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मतलब काफी सालों से, मतलब जब से मैं जॉब कर रहा था ना, तो मैंने अपना एक ये बनाया था कि मुझे इतना अर्न करना है, तो मुझे आ, उतना मिल जाता था। मतलब जैसे मैंने 2000 से स्टार्ट किया था, 2000 रुपये से, कि जब मैंने 5000 सोचा तो मुझे वो मिलने लगे कि 7000। तो वो मैंने जब सेट किया तो मुझे वो मिलते गया। मतलब अभी भी, मतलब अभी तक मैं वही कर रहा हूँ। मतलब अभी भी मैंने सेट किया हुआ है, तो उतना मैं कमा रहा हूँ उससे। यस, तो मैं एग्री करता हूँ आपने, मतलब आपने जो बोला ना मनी स्टैट के बारे में, तो वो है। तो मैंने अपनी नीड को देखा है, अपनी वर्थ को देखा नहीं मैंने। यस, मतलब नीड के हिसाब से प्लान करता था, यस, अपने वर्थ के हिसाब से नहीं। तो अभी मुझे ये समझा। यस। तो नीड के साथ में वर्थ को जोड़ दो, क्योंकि कई बार ना एक सोच होती है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, पैसे के पीछे भाग रहा है। पर उत्तम, एक चीज है मैंने जो सीखी है, जितना ज्यादा आपके पास होगा पैसा, उतना आप लोगों के कल्याण में, लोगों के लिए लगाओगे। ये आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, तो आप जितना आएगा आप दूसरों के लिए करोगे ये सब। ओके, वेरी गुड। एक सक्सेस स्टोरी मैं सुनना चाहूंगा। एक जन है यहाँ पे,
पिछली बार हमने मेधा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी हुई थी, और उसके पहले भी किसी एक जन का बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने। और आज बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, पर एक सक्सेस सेलिब्रेशन है। क्या आप लोग सेलिब्रेट करना चाहोगे? अगर यस तो से वी आर रेडी, वी आर रेडी इन द चैट बॉक्स, देन आई विल टेल द सक्सेस स्टोरी कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। Yes, Medha, great idea. We are ready. We are ready. We are ready. Ready. We are ready. Okay, okay, Simran. Yes, thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Let's start. तो पहले मैं बता देता हूं कि क्या है स्टोरी, और फिर जिस बंदी का सेलिब्रेशन है उसको हम लेके आते हैं आज सामने। तो ये जो सेलिब्रेशन है, अपने ग्रुप में बिल्कुल शुरुआत से, जब ये ग्रुप शुरू हुआ था तब से ये बंदी अपने ग्रुप में जुड़ी हुई है, और ज्यादा बात नहीं करती, पर जब बोलती है तो बहुत अच्छा बोलती है, और मैं सुनना चाहूंगा आज उनकी भी आवाज। पर ये कहानी उनकी है कि अमरावती से हैं, ओके, अमरावती से हैं, और जीरो से उनका एक सपना था, और जीरो से उन्होंने अपना सपना शुरू किया। शी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से शुरू किया, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 1 तारीख को उनका सपना वो पूरी तरह से साकार करने वाली है। और मैं बुलाना चाहूंगा शुभांगी को। शी इज फ्रॉम अमरावती, और उसका पैशन था, जब उन्होंने उनका इकिगाई किया तो उनका पैशन था कि उनको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ स्किल्स नहीं था, पर एक लगन था, एक पैशन था, और एक जुनून था कि मुझे ये करना है। और जब कुछ स्किल नहीं था, कुछ सपोर्ट नहीं था, उन्होंने शुरू किया। और आज मुझे खुशी होती बताते हुए कि आज अमरावती में वो एक टॉप की फेमस ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी है। वो सिर्फ ऑर्डिनरी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, टॉप की ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है। और आज शाम को भी जब मैंने उनसे बात की, बोला कि शुभांगी आज आने वाले हो क्या क्लास में, तो बोली नहीं सर आज नहीं आने वाली, शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं एक जन का मेकअप ही कर रही हूँ और मुझे लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा कि प्लीज आ जाना अगर हो सके। तो मैंने देखा अभी अचानक ये बातें चल रही थी, तो शुभांगी भी यहाँ बैठी हुई है। और शुभांगी, आई फील सो प्राउड ऑफ यू, आई फील सो प्राउड ऑफ यू। शी became the bridal makeup artist. She travels all over the places now, and her dream was to have a small what you call a parlor or beauty parlor, I don't know what that is, in her house, so that people can come to her also. और जब कुछ भी नहीं था तो उसने अपनी कमाई से, अपने पैसों से खुद के घर में अच्छा, बहुत ही, उसने मुझे कल, मैंने वो वीडियो कॉल पे देखा था कि आपका कितना सुंदर आपने अंदर डेकोरेशन किया हुआ है, सब मिरर्स है, टेबल से, चेयर से, जो कुछ था। तो आई एम फीलिंग सो प्राउड कि एक सक्सेस स्टोरी है, एंड लेट्स सेलिब्रेट शुभांगी। और उसके बाद में हम सब जन अपने चैट बॉक्स में जाके लिखेंगे, क्योंकि 1 तारीख को उनका इनॉग्रेशन हो रहा है उनके पार्लर का। सो नहीं, पहले करते हैं, पहले उसको सेलिब्रेट करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभांगी। सब जन लिखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभांगी इन योर चैट बॉक्स। और फिर शुभांगी मैं आपके पास आने वाला हूं। हार्टी में माधवी सेइंग हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस वी आर रेडी, ओके, ऑल द बेस्ट, कांग्रेट्स उत्तम, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर नीता, शुभा, स्नेहा, सिमरन, ओके ओके, गुड 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 गुड, देवेंद्र, मेनी कांग्रेट। तो ये एक एनर्जी होती है जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो दिल से, तो वो जो दुआएं हैं, वो जो एप्रिसिएशन है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। तो शुभांगी आ जाइए और बताइए कैसा लग रहा है। आपने इतनी बड़ी तारीफ कर दी मेरी कि बहुत अच्छा लग रहा है। तारीफ नहीं, ये तो आपका क्रेडिट है शुभांगी, तारीफ नहीं, मैं दिल से कह रहा था। और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही कि आप जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हो, और मेरी यही शुभकामना है कि आप ऐसे ही बढ़ो, आपका विकास हो। यस, आगे बोलिए। थैंक यू सो मच। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी, और जो है ना, एक प्रेरणा जो मिलती है ना आपसे, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी कहानी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गई हो आप आज? हाँ, मैंने जब चालू किया था तो 20 रुपए से चालू किया था। 20 रुपए स्टार्टिंग लेती थी मैं, 20 रुपए से स्टार्टिंग लिया करी। और आज अगर मैं ब्राइडल का मेकअप लेती हूँ तो 5000 तक के ब्राइडल मेकअप कर लेती हूँ यहाँ से। यानी 20 रुपए से चालू करा और 5000 रुपए तक जाके पहुंच गई। आज महीने का, यानी कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था, तो आज मैं महीने का कम से कम 20 या 25 हजार रुपए कमा लेती हूँ।
क्या बात, आप रुलाओगे क्या यार मुझे आप? हाँ? सच मेरे आंखों में आंसू आ रहे सुन के, क्योंकि मैं आपको जानता हूं और आपने कहा, और जब ये मुझे नहीं पता था कि आपने 20 रुपया से शुरू किया था ये। सच में 20 रुपए से चालू किया था। आज मैं महीने के 20 या 25 हजार रुपए कमा लेती हूँ। वाह। और अभी आपने तो जो, सीजन चालू है। और अभी आपने जो ये आपका खुद हाँ का बोलो। पार्लर शुरू किया, ये किसी से पैसा लेके शुरू किया या खुद की कमाई पे किया है? खुद की कमाई पे किया है, जो भी किया है खुद की कमाई पे किया है। वाह, सच सच में। मैंने सोचा था, हाँ मुझे ऐसा लगा था कि कभी ना कभी तो मेरा पार्लर होगा होगा। और ये जो लॉकडाउन चालू था तब ऐसे नहीं लग रहा था कि कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे सोच के मैं कर रही थी। लेकिन जब से मेरा स्टार्ट हो गया ये, तो इतना अच्छा चला है कि अभी मैं बोल सकती हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और करना भी चाहती हूँ और करूंगी, और आगे बहुत मेहनत करूंगी। आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? लोगों को क्या बताना चाहोगे? आपने 20 से शुरू किया, 5 तक पहुंच गए हो, और मुझे पता है आपके कितने क्लाइंट्स, आप कहाँ कहाँ, कभी नागपुर जा रहे हो, कहीं चंद्रपुर जा रहे हो, कहीं कहाँ हाँ जा रहे हो, रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, अकेले निकल जाते हो, उस बारे में बताइए। हाँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तब, अगर कोई क्लाइंट रहता है, उन्होंने अगर मुझे कहा कि आपको मेरे घर पे आना है, ये टाइम है, आप आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, मैं सीधा बोल दी, कुछ भी नहीं सोचती और बोल देती हूँ हाँ मैं जरूर आऊंगी, और वही टाइम पे चली जाती हूँ। कभी कभी ऐसा डर भी लगता है कि अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएंगी, कोई ये रास्ते पे कोई रहेगा नहीं रहेगा, फिर तब ऐसा लगता है कि नहीं चलो जाना तो है, आएंगे वापस। ऐसे मैं क्या बोलूं, सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे पता है आप अभी भी मेकअप करके आई हो किसी दुल्हन का वहां पे, आप जब हमारी बात हुई थी, और मुझे पता नहीं था आप आ जाओगे, हाँ पर आपने बोला सर मैं लास्ट में पक्का आने वाली हूँ, और मैंने अचानक आपको देखा, पक्का। इसलिए मैंने आपको बुला लिया। फिर हाँ फील सो प्राउड ऑफ यू करना है। शुभांगी। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत बड़ी कहानी आपने और शेयर पता की है। है, आपने मुझे आपने मुझे यानी कि जो सेकंड सेशन था अपना, उसमें आपने बोला था कि मंकी माइंड जो होता है, वो मंकी माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो बहुत आते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके आगे कैसे बढ़ना है वो मैंने सीखा है। मैं नहीं सोचती हूँ ज्यादा कि ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना है मुझे। मुझे बस आगे ही बढ़ना है, बस आगे ही बढ़ना है। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे बस आगे ही बढ़ना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप अभी मैं मेरी ये जगह नहीं सोच बैठोगे ट्रेनर करके और बताओगे लोगों को कि सक्सेस कैसे मैनिफेस्ट कैसे करना है। नहीं, और आपने एक बात और बोली थी कि जब आपके डोर पे कोई आता है, अपॉर्चुनिटी आती है आपके डोर पे, आप बोलते हो कि टीवी देखते हो, जो कुछ भी आप वर्क करते हो, वो छोड़ के अगर आप किसी क्लाइंट को लेते हो, तो वो एक बार आएगा, बार बार फिर से आएगा। क्योंकि अगर अपन उनको नहीं बोलेंगे नहीं आज नहीं करना है, आप कल आ जाओ, वो नहीं आएगा। तो ये मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मेरे डोर पे कोई आता है तो मैं कभी उनको नहीं बोलूंगी। चाहे मुझे कितने भी रात हो जाए, 11 बजे तक के मैं कर देती हूँ क्लाइंट को, उनका पूरा जो भी रहता है क्लाइंट करती हूँ 11 बजे तक, लेकिन उनको कभी नहीं बोलती। ये मैंने सीखा है आपसे, और ये आपसे ही सीखा है। यस, मुझे याद है मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर ओनली वंस। मौका आपके दरवाजे को एक हाँ, बार खटखटाता है, फिर वो आगे बढ़ एक जाता बार। है। हाँ हाँ, इसीलिए किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर एक बार नहीं बोल दिया तो फिर वो नहीं आएगा। ऐसे सोच कायनात के मैं किसी को नहीं कायनात बोलती। बोलती है कि शुभांगी को इसकी जरूरत नहीं है, शुभांगी ना बोल रही है तो आप अगली बार नहीं जाना है उसके पास में। हाँ एक बात मैं बताना बोलती चाहूंगा है। शुभांगी, वैसे हमने ज्यादा बात नहीं की, पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है आपके बारे में, और मैंने आपके बारे में एक बहुत हाँ अच्छी चीज सीखी जो अभी आप बोल रही थी। तो वो ये चीज है कि हाँ शुभांगी अगर खाना खा रही है रात को खाना खा रही है, प्लेट हाँ में खाना है और किसी का फोन आ जाता है, तो वो अपनी प्लेट बाजू को रखती है, क्योंकि क्लाइंट सबसे बड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, मौका आया हुआ है। शुभांगी अपनी प्लेट बाजू को रखती, खाना भूल जाती है, पहले क्लाइंट को अटेंड करती है, फिर उससे बात करती है फोन पे। तो ये जो आपका एक डिटर्मिनेशन है, एक जज्बा है कि नहीं पहले क्लाइंट आना चाहिए, जो आपका मैंने कहा ना मैसिव एक्शन लेना चाहिए, तो आप सब चीजें छोड़कर
फोकस आपका बिजनेस के ऊपर रखते हो। क्या ये सच है? मैंने सुना है कहीं से तो भी। हाँ हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। आज सवेरे की बात है, जब मैं आइसक्रीम खा रही थी, एक क्लाइंट आए हुए थे, मेरे मुंह में आइसक्रीम थी और वो मेरे दरवाजे पे थे। तो क्या मैंने बोला कि आंटी आ जाओ, 2 मिनट रुको, बस मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैंने वो रख दिया वैसे और क्लाइंट करने लग गई। ये सच बात है। जब भी मेरा क्लाइंट का फोन आता है, मैं जो भी हाथ में मेरा घर का काम रहे या खाना खाने का रहे, काम कोई भी काम रहे, तो मैं वो छोड़ देती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ कि क्या ये रह जाएगा, वो रह जाएगा, नहीं देखना है मुझे। वो घर पहले क्लाइंट करो, बाद में अपना काम करो, क्योंकि उनके भरोसे ही अपना सब कुछ चल रहा है अभी। अब मेरे क्लाइंट ही है ऐसे कि उनके भरोसे पे मैं इतना कर पाई हूँ। अगर वो नहीं रहते थे तो मैं इतना बड़ा मेरा जो ब्यूटी पार्लर का है वो भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए भगवान भी होते हैं, क्लाइंट के स्वरूप में भगवान ही आ जाते हैं। आप बोलती बहुत अच्छा हो। थैंक यू। यस यस, मुझे पता नहीं, मेरे शब्द खत्म हो चुके हैं शुभांगी, क्योंकि मैं आपको पहले से जानता हूं और कहां से कहां पहुंच गई हो आज आप। देखकर बहुत खुशी हाँ, होती। बिल्कुल। मैंने आपका सुना, आपने 2000 से स्टार्ट किया, मैंने 20 रुपए से स्टार्ट किया। मुझे भी अभी ऐसे लग रहा नहीं, अपन कमा सकते हैं, अपन भी अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए। मैंने भी बढ़ा दी। 5 से 1 लाख पे जाना है। मैंने तो 10 लाख का रखा है। नहीं, मैंने वो ब्राइडल मेकअप का मैंने सुना है कि लोग, एक है मुंबई वाला जो आता है, वो 1 लाख रुपया लेता है हाँ ब्राइडल मेकअप का। मैं शुभांगी को हाँ वहां हाँ। देखना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, मैं जाऊंगी वहां पे। सो थैंक यू, दैट वाज शुभांगी फॉर ऑल ऑफ यू। और ये इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है, मेरे तो आंखों में कई बार आंसू आ चुके। मैं बीच में कैमरा बंद करके आंसू पोंछ रहा था। तो मैं सुनना चाहूंगा कुछ लोगों से कि शुभांगी की कहानी सुनकर आपको क्या लगा। दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो मैं शुरू करते हैं मेधा से। मेधा, क्या आप बोलना चाहोगे कुछ? जयश्री सिंह, रियली प्राउड ऑफ यू शुभांगी। थैंक यू जयश्री। शीतल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। परिसा, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। असीत, वाह, वेलकम असीत, आफ्टर लॉन्ग टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशंस असीत कह रहे हैं। जस्ट अ मिनट मेधा, मैं आता हूं आपके पास में। पर शुभांगी, आपको कितने लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में आप देखिए। मेधा भी कह रहे कॉन्ग्रेट शुभांगी एंड विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस, ऑल द वेरी बेस्ट। शैला, थैंक यू शैला। एंड स्वाति ताकसंडे ऑल्सो सेइंग वाओ। तो मेधा, वुड यू लाइक टू, ये कहानी सुनकर क्या लग रहा है मेधा आपको? इफ पॉसिबल, यस। बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। एक तो तुम्हारी कहानी सुनी थी, उस बाद में ये सक्सेस स्टोरी सुनी थी। तुम्हारी तो जर्नी मैंने देखी भी है, सुनी भी है, आई एम द विटनेस। और वो बहुत टची है जो बताया था आपने, 2000 से 25,000 का वो जो जर्नी है वो भी बताया था। फिर भी वो सुनते समय ऐसे मतलब इट टचेस टू माय हार्ट, वो एक। और दूसरी, इनका जो पैशन है अपने काम के प्रति, उनका जो विश्वास है, आदर है, प्रेम है, मतलब डिवोशन का जो फीलिंग है, दैट मतलब वो बहुत ही अच्छा है और वही काम कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। और एक विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब पार्टिसिपेंट्स है, एक बात मैं अनिरुद्ध बोलना चाहती हूँ। तुमने जब भी कांचन जी को पूछा था, आई थिंक कांचन जी आप हो ना, तो उनके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट थी ना, वो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। मतलब माहौल बन गया। आई थिंक वो कांचन जी ही थी, जैसे आपने उनको पूछा था, उत्तराखंड के जो थे, अभी वो आई थिंक अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में है। yes. तो उनके चेहरे पे जो स्माइल था, एक्साइटमेंट थी, तो ऐसे मतलब माहौल बन गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच। यस कांचन, क्या लग रहा है ये सुन के? मेधा को आप जानते नहीं, मेधा आपको जानती नहीं, फिर भी एक कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे। आप आपके स्माइल से वो एक्साइटमेंट देख पाई। क्या कहेंगे कांचन आप? यस सर। अनिल सर, ऐसा मतलब मेरा मानना है कि हम जो अगर अपनी लाइफ में 3D फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी मतलब मैंने भी अपना करियर 3000 से स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनी, बट नाउ आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी। वाओ। मतलब सिर्फ अपनी डेडिकेशन से। मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं हमेशा इंजीनियर बनना चाहती थी।
इवन उन्होंने मुझे बायोलॉजी से स्टडी भी करवा दी, फिर भी मैंने उसके बाद उनसे छुप करके मैथमेटिक्स से सिंगल सब्जेक्ट से 12th के एग्जाम्स दिए, फिर इंजीनियरिंग करी। मतलब जो मैं चाहती थी मैंने सिर्फ अपनी डेडिकेशन से पाया। और आज मेरे अंदर में अच्छे अच्छे बीटेक के लड़के हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको मैं गाइड करती हूँ, लीड करती हूँ। तो अपना इच्छा शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच कांचन। और बहुत आपने जो 3Ds बताए, शायद आप सभी ने लिख लिए होंगे आपके नोटबुक में, वो कांचन जी का सक्सेस है 3D वाला, आप भी उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच कांचन। और लास्ट में एक बार कोई और बताना चाहेगा? मे बी लेट्स कम टू शैला। आई एम सॉरी दैट इट वाज ऑल इन हिंदी, Shubhangi's story, but I would really like to hear from you, Shaila, if you are there. How do you feel about Shubhangi? I feel very happy and proud that there is someone who was at zero, and we call it zero, but actually it's not a zero. It's the beginning. That's all I see it as. And how you can build your dreams one by one, little by little. And I think it's only a matter of time before all our talent and dreams are realized. Because they say the universe does not like a vacuum. So the universe always wants to fill a vacuum. So if you fill a vacuum, then the universe will immediately fill it. And so I don't know, from my experience, it's important to know what you want to fill. Because if you are not sure about what you want to fill, the universe will fill it with anything. So be careful with your dreaming, because sometimes our dreams are not completely, what shall I say, crafted very well. So it's important. I would say that it's important, and that your intention for why you want money is also important. Only to buy a car or a house, I don't think that's enough. That intention, because you will get the money, and if your intention is not pure, that intention can destroy why you have the money. So, but I'm very happy to आंटी थोड़ा पानी दे दोगे? But I'm happy to hear your story, Shubhangi. All the best and wish you many. Aniruddha, there is a Parisa wanted to say something. Okay. Parisa, you want to say something? Just go ahead. Unmute Hello, everyone. yourself. Yeah, I am so sorry. Today I am somewhere I cannot keep the video on. But it was a very inspiring story. And dear Anirudh, I remember someone in 2010 when I came to India. She was also has a dream of being the beautician. And she did not have any support. She was Indian itself. And I remember when she has started, she never gave up. But now you cannot even meet her. She's so much busy. And she purchased a salon in Bandra, Mumbai. Wow. In fact, I was very close to her, but now I don't have, she doesn't have even time for me to see. And always she say, I remember you saw me, I was living in a small room with 3 more girls. But because of that dedication and trust and intention that you mentioned at the beginning of session, now she has reached to that level, and each bridal makeup she goes for 1,30,000, 1,15,000, not less than that. So I wanted just to tell her, don't give up. I have seen with my own eyes, my own friend, she has reached to that level, and she said to me very soon, I am going to enter to the Bollywood industry as well. Wow. Yeah. That was so inspiring, Parisa, sharing your story, not your story, but someone you know close and her journey. तो शुभांगी, ये आपके लिए परिसा ने बताया था कि उसने भी कम इसमें शुरू किया था परिसा के दोस्त ने, और आज परिस्थिति ऐसी है कि आप उसको मिल भी नहीं पाते, इसका इतनी बिजी हो गई है, और 1,13,000 से 1,15,000 रुपया वो ब्राइडल मेकअप का लेती है। और परिसा ने आपको शुभकामनाएं दी है कि आप भी एक दिन उस मुकाम पे पहुंचो, और मैं भी देखना चाहूंगा आपको शुभांगी उस मुकाम पे, और वो समय जरूर देखूंगा। मुझे आपको मिलने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। शुभांगी, क्या कहना चाहोगी? थैंक यू
थैंक यू, थैंक यू। Welcome. हाँ, All वो the best. ऑल द All बेस्ट the सभी best. की थैंक तरफ से। यू, यस थैंक यू, थैंक यू। यस। अब मुझे सवाल पड़ा है एक, क्या करें? सो दिस वाज माय स्टोरी, यहां से शुरू हुआ। एंड सेकंड ब्लॉक जो है, लैक ऑफ एम्प्टीनेस। शैला जी, जब when Shaila was talking and she spoke about emptiness, the void, you need to have the emptiness to fill up with something. If you don't fill up with your intention what you want, then the universe will fill that emptiness with what the universe wants. And that was the second block I wanted to talk, but I look at the clock over there and it's saying 9 o'clock. And तो क्या करें अभी? इसको आज के लिए इसको रोक के अगले हफ्ते में इसको लें? What shall we do? Shall we stop over here and we'll touch this, go into the depth of this, because this is very important aspect of manifestation. If you don't create that void, if you don't create that emptiness, you can't manifest what you want. So I'll just go through the slide and check with you. So everything is energy, and money is energy. And there's a famous quotation from the Heart Sutra which says, form is only emptiness, emptiness only form. So it's just everything is energy. And we did touch this Heart Sutra in one of the sessions in the past. So would like to hear from few people कि क्या करें? एक हफ्ता रुकोगे? Lalita, would you like to wait for one till next Thursday and we touch this second block? Yes, sir. Lalita, where are you? Next week, sir. Sure? Next week, sir. Okay, that's yeah, next week. So पर मन तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पर लोगों को ना यहाँ पे, मुझे भूख लगी है कांचन अभी। यस वो ये नहीं मैं सिचुएशन मजाक को कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड करना पड़ा है बस। बिल्कुल बिल्कुल। What's happening? There are so many housewives and Yes. working women, so they have to, at 9 they go and they start cooking, and then the family eats. Yes. So I want to respect Yes. that. And at the same time, I'm so grateful that all of you, I know you have so many things to do in the evening, but you still make time and you come and you attend. And I love your presence, the way you sit and 100% attention, 100% focus, and you take notes and then you share those notes on the WhatsApp group. I really love it. And I would really encourage each one of you, write your notes and put it on the WhatsApp. So everybody learns from your notes. So don't stop yourself. One of the virtue is generosity. And in general, when we talk about generosity, it's about sharing your notes also. Just be generous. Give your notes, share your notes, and you'll see the magic happening in your life. So that was really nice. I really enjoyed. Yes. सर मुझे कुछ पूछना है। Yes. सर हम जो सेकंड है लैक ऑफ एम्प्टीनेस, वो तो नेक्स्ट वीक करेंगे, पर सेल्फ वर्थ कैसे जाने, इसके बारे में भी थोड़ा बोलेंगे क्या? यस, एक चीज है कि जैसे अभी माधवी जी का योगा का हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे थे, और जब हम माधवी जी का एक एग्जाम्पल करके ही ले रहे हैं, तो अगर समझिए माधवी जी योगा सेशन के लिए 1000 चार्ज करती है, और वो चार्ज करते टाइम उनको कुछ अनईजीनेस फील नहीं होता। शी इज कंफर्टेबल से कि मुझे 1000 रुपया चाहिए, और लोग दे देते हैं। पर जैसे ही माधवी कहेगी कि मुझे महीने का 10,000 चाहिए एक क्लाइंट को, और जब वो कहती है कि 10,000 चाहिए, और उसके अंदर मन में एक अनईजीनेस फीलिंग होता है कि नहीं ये कुछ गलत है, तो वहां पे आपको पता चलता है कि आप अपने थर्मोस्टेट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर समझिए शुभांगी है, वो कहती है कि मैं 3,000 पर क्लाइंट ले रही हूं, और बाद में वो सोचती है कि नहीं अभी मैंने सेशन किया, मैं 20,000, अभी सीजन भी चल रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो मैं 20,000, जैसे ही वो सोचती है 20,000 के बारे में, मुझे 20,000 मांगना है लोगों से, और अगर वो कंफर्टेबल है सो इट्स इजी, पर जैसे ही वो सोचती है 20,000 और उसके मन में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है, सो द वाइब्रेशंस आर कमिंग डाउन। इट्स नॉट अ वाइब्रेशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। तो थर्मोस्टेट सेट करते टाइम आपको खुद को अंदर जाके पूछना है, am I really happy? जो हमने इकिगाई किया था, is it giving you, are you doing it from that space of love? अगर space of love में से नहीं हो रहा है, so you have to work on your limiting beliefs. कोई तो भी limiting belief है जो आपको रोकता है। खत्म कर। डॉक्टर स्वाति, does that help you? Does that answer your question? Yes sir.
Yes, sir. Thank you. और इट्स नॉट अबाउट आस्किंग हाउ मच मनी, ओके। सब जगह आप इसको हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में आप अपना थर्मोस्टेट बढ़ा सकते हो। आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने कहा था मैं गोवा गया था ट्रेनिंग के लिए। डॉक्टर स्वाति, आपको याद है? हाँ सर। तो तब मैंने हाँ। सोचा था कि अपना थर्मोस्टेट बढ़ाऊंगा, और मैंने सोचा कि जब वो इनविटेशन आया कि आप ट्रेनिंग सेशन लोगे, ये मैं आपको शेयर कर सकता हूं अभी। तो मैं सोच रहा था कितना मांगू। एक दिन का ही सेशन था, पूना से गोवा जाना है, एक दिन का सेशन लेना है, वापस आना है। और मैं सोच रहा था कितना मांगू, कितना मांगू। कितना मांगा होगा स्वाति? पता नहीं। नहीं पता सर। ओके, तो मैं बता देता हूं ये थर्मोस्टेट में खुद का कैसे बढ़ा रहा था। मैंने ईमेल लिखा और प्रपोजल जब मैंने टाइप किया तो वहां कमर्शियल्स लिखते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज कितना है, कितना फीस होगा, वो लिखना था। और मैं डर रहा था कि ये लिखूं या ना लिखूं, लिखूं या ना लिखूं। पर एक बार मैंने बोला 36,000 मांग कर तो देखते हैं पर डे, एक सेशन, एक दिन के लिए 36,000। 5 स्टार होटल बुकिंग, फ्लाइट का एक्सपेंसेस सब उन लोग करेंगे, और मेरा ट्रेनिंग फीस 36,000 होगा। डर लग रहा था, फिर भी मैंने मेडिटेशन किया, लेवल हाई किया, एनर्जी लेवल ऊपर लेकर के गया, और फिर उस एनर्जी लेवल में ईमेल में 36,000 लिखा, और उसी एनर्जी में उसको सेंड भी कर दिया। और फिर मैं राह देखते बैठा। ये शाम को किया था, रात के वक्त। और सुबह जब मैं आके देख रहा था तो उनका जो सीईओ है उसने प्रपोजल एक्सेप्टेड, प्लीज सेंड योर डिटेल्स फॉर द फ्लाइट बुकिंग। कैसे लग रहा है डॉक्टर स्वाति सुन के ये? हाँ सर, यानी ये सब काम करता है, सिर्फ अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं। बस विश्वास रखना है, एक फेथ रखना है। और तो सर, जो आपने 5 वर्च्यूज बोले हैं, तो वो जब हम फॉलो करते हैं तो अपने आप ही अपन हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। Yes. और इसीलिए सब मैनिफेस्ट हो सकता है। Yes. इसलिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि 5 वर्च्यूज हम फॉलो करें। एग्जैक्टली तो मैं आप सभी को एक चीज बता, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज write those 5 virtues on a piece of paper. Lalita, please write those 5 virtues on the piece of paper and then post that 5 virtues on the WhatsApp. Lalita, that is the homework for you, for everyone. So write it, post it on the WhatsApp. What are those 5 virtues? And put that paper somewhere where you can see it every day. Okay? On some wall, and keep, जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा, keep practicing those 5 virtues. That is the most important. That is the secret of manifestation. From the energy of love, be generous, be kind, be honest, and be mindful. Okay. Thank you, Swati, for asking that question. And just want to say how grateful I am that aap log the, and it's just 1 more minute for 9 o'clock, and I want to close the session today. And next Thursday, we'll be talking about emptiness. What is the importance of emptiness in manifestation? And I'm so glad that Shaila brought up that issue, and we will be touching that issue on next Thursday. So enjoy your week, keep manifesting, and keep practicing your virtues. Okay? And bye-bye from here. Good night. Enjoy your evening. Good night. Bye. Thank you.